And we now move from these beautiful moves to eyes in the sky from the direction of Rashtrapati Bhavan. The first formation going past the saluting base, Rahat, comprising 5 ALH aircraft in arrowhead formation, led by Wing Commander H.S. Chima, Wing Commander G.D.K. Reddy, Wing Commander S. Jamkas, and Wing Commander J. Rathore, Wing Commander Nenwa. और अब कुछ ही देर में सलामी मंच के ऊपर होगी मेघना फॉर्मेशन। ग्रुप कैप्टन मनीष गुहा जो चिनूक को उड़ा रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। अन्य पायलट मी-17 को उड़ा रहे हैं विंग कमांडर एन मेहरोत्रा, विंग कमांडर गोपी कृष्णन, स्क्वाड्रन लीडर मोहित और स्क्वाड्रन लीडर पी.एन. रेड्डी। Special provision has been made to give you aerial shots too. So normally we take a look at the fly past from ground upwards, and here you're getting a view what the pilots actually see when they look down. कर रहे हैं विंग कमांडर गिरीश कुमार और अन्य पायलट विंग कमांडर वाई श्रीधर, स्क्वाड्रन लीडर वीर कुमार, स्क्वाड्रन लीडर चंदन पटनायक और विंग कमांडर गोपी कृष्णा। इस फॉर्मेशन में 5 सारंग ALH लैडर फॉर्मेशन में तिरंगा फहराते हुए दिखेंगे। Commander Y. Sridhar, Squadron Leader Veer Kumar, Squadron Leader Chandan Patnaik and Wing Commander Gopi Krishna, all participating in this formation. The Tiranga going past the saluting base. एक MI-35 की अगुवाई और पीछे 4 अपाचे हेलीकॉप्टर्स 5 एरोहेड फॉर्मेशन में उड़ान भर रहे हैं। ग्रुप कैप्टन क्षितिज अवस्थी, ग्रुप कैप्टन विजय राघवन, विंग कमांडर C.K. राव, विंग कमांडर G. पठानिया, अन्य पायलट। Traditionally, flypasts also serve as an aerial salute. They show respect, display aircraft and showcase flying skills and delight the public. Forward to Tangale. This formation comprising 1 Dakota aircraft in the lead with 2 Dornier aircraft in echelon flying in WIC formation will fly past at a height of 300 meters over the water channel north of Rajpath. The Dakota is being flown by Wing Commander S.S. Gehlot, the Dorniers by Wing Commander Shubham Mishra and Wing Commander Abhishek. The visuals giving you a feel of chill in the air, which we're all experiencing here down on the ground. Commander Hariom Dubey. The clear blue skies today, perfect weather for a perfect fly past. And for these men in blue of the Indian Air Force, the blue sky seems to be just an extension of them as they take wing and vanish into the blue. Hoj with Flight Lieutenant Abhishek Bhandari and the MiG-29's Group Captain K.D. Singh, Wing Commander Amol Sudhir Kelkar. ये विमान विभिन्न शहरों से उड़ान भरते हैं। अनुशासन Excitement galore at the Republic Day Parade right now. Speed, pulse racing daring, and of course there is precision. Beautiful visuals from our cameras. Rafale aircraft, arrowhead formation, 300 meters at the height of AOL, above obstruction level.
नेतृत्व विंग कमांडर विक्रम कर रहे हैं। अन्य पायलट हैं जैगवार में ग्रुप कैप्टन एन अभिषेक और सैफ जैदी, मिग 29 ए रंजन और विंग कमांडर मुकेश, सुखोई में विंग कमांडर करण डोगरा और विंग कमांडर ए के तिवारी, और ये आए बास फॉर्मेशन में। The Bars formation with meters AOL over water channel north of Rajput. This formation will pull up and outward for the Trishul maneuver. Going higher up into the clouds and then peeling into 3 different directions. The Trishul formation under the command of Group Captain A. Dhankar. The other pilots, Group Captain Karan Deo and Wing Commander. वर्ष हम पूरे कर रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में अब अगली फॉर्मेशन है अमृत। इस फॉर्मेशन में 17 जैगवार विमान 75 की आकृति बनाते हुए सलामी मंच के ऊपर से गुजरेंगे। इस फॉर्मेशन की अगुवाई कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन अविनाश सिंह, ग्रुप कैप्टन गौरव अर्जारिया और विंग कमांडर संदीप जैन। अन्य पायलट हैं ग्रुप कैप्टन एनपी वर्मा, विंग कमांडर प्रखर, विंग कमांडर रोहित राय, विंग कमांडर सिद्धार्थ, विंग कमांडर अंकुश तोमर और विंग कमांडर पवार। What a splendid display it is. For the first time, we also have some naval colleagues of the Indian Armed Forces flying with their Air Force colleagues. The diffused glow of a chilly January morning, witnessing, along with all present, the reaffirmation of our national identity, a nation on the move, men and their machines.